आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मेडिकल अपॉइंटमेंट कैसे, अब बीमार कैसे पड़ गए, ये सवाल तो हम नहीं कर सकते कि मेडिकल अपॉइंटमेंट कैसे आ गया, ओके ना, थिंग्स कैन हैपन। तो लेकिन अगर प्लान तरीके से होगा ना, देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू, मतलब यूटिलाइज एफिशिएंटली ऑल द रिसोर्सेज। की रिकॉर्डिंग होती है तो रिकॉर्डिंग आपको टाइम पे मिल जाता, आप रिकॉर्डिंग देख लेते कम से कम, है ना। बकरीद के दिन यस सर। छुट्टियां होंगी अभी तो, है ना, तो छुट्टियों में आप अगर मतलब एक थोड़ा तो टाइम निकाल सकते हैं। होपफुली उतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं रहता गल्फ में बच्चों को ड्यूरिंग ईद एंड बकरीद, राइट, जितना एंगेजमेंट इंडिया के बच्चों को रहता है ना। यस करेक्ट सर। है ना। तो थोड़ा कम सो के आप लेक्चर ही देख लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है, इन सब चीजों को, दैट्स दी ओनली थिंग, ठीक है। थोड़ा सा बस अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहेंगे ना बच्चे, देन इट विल बी लाइक सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। जो अनयूटिलाइज टाइम है वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके सिद्दीका, दिस फॉर ओके एवरीवन सर। आल्सो राइट नाउ, है ना। सिद्दीका के लिए स्पेशली, क्योंकि लास्ट लेक्चर नहीं किया था। अब इस लेक्चर में ना यू विल बी फेसिंग सम डिफिकल्ट, तो उन डिफिकल्टीज को साथ में रखते हुए आप ट्राई कीजिएगा। आपको केमिकल काइनेटिक्स हुआ है स्कूल में अभी तक? यस हैव सर, यू वी स्टार्टेड स्टार्टेड। केमिकल काइनेटिक्स? यस, वी स्टार्टेड इट। ठीक है, चलिए। सो वी हैव डन अन्ना, Purna, Khadija, Soha, Harsha, Yuya. I think all the other people, all of you guys were present in the last Wednesday's lecture, right? सब लोग थे ना? यस सर। यही थे आप, अन्नपूर्णा, अन्ना, नो वेरी प्रेजेंट इन द लास्ट lecture? नहीं, नो सर, आप नहीं थे, कहाँ थे आई आप? हैड अ यूनिट टेस्ट। How did you interest? I think we have established this very early in the batch की यूनिट टेस्ट की वजह से आप लोग लेक्चर्स नहीं छोड़ेंगे, राइट, है ना अन्ना, हमने बोला था ना ये बात। Yes, sir, but it was ठीक in है, the next day, so I needed some सो time to prepare. दैट्स नॉट, अब बताइए, लाइक यू मिस दैट लेक्चर, डिड यू वॉच द रिकॉर्डिंग? No, sir. अब you will be facing bit of problem today, so I because of started that it in one school. thing, ठीक है, I understand, completely understand, ठीक है, hopefully, मतलब I hope it's, I hope you don't face any problem, but ज्यादा chances है ना कि यार if you have not done, then आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, चलिए। What about others? और कौन नहीं था? I think Noha, you were not present in the last lecture, right, Noha? Noha, were you present in the last lecture, Wednesday? Noha तो I think काफी दिनों से नहीं आ रही थी। Mariam is not here today. Zeba is not here today. चलिए ठीक है, खदीजा थी आई गेस, राइट, खदीजा, सोहा, और कौन नहीं था? नोहा, व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग यार, नोहा भी पता नहीं क्या हो जाता बीच बीच में बच्चों को। सोहा, व्हाट अबाउट यू, आप थे क्लास में सोहा लास्ट वेडनेसडे? या यू आर प्रेजेंट, राइट, ठीक है, ओके। So we'll be mostly doing questions in today's lecture, ठीक है, and this lecture is quite important, यहाँ से आपके पास कुछ सवाल बोर्ड्स में डायरेक्टली आ सकते हैं। Yes, Noha, Yes, sir. were My you present in microphone the was last not lecture? working. Okay, No, it's sir, I working was now. not present. Did you watch the Yes, sir. lecture? No, Did you sir. watch the lecture? No. Why were you absent, Noha? Sir, I had PT1 exams. मैं also happy to know. ठीक है, लेकिन अब देखिए आज कितना समझ में आता है आप लोगों को, है ना, बिकॉज आई कैन नॉट रिपीट दैट लास्ट लेक्चर, रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी उसके बाद, फिर समझिए आज, है ना, ट्राई करके, ठीक है। सो एंड आई स्पेशली डिड नॉट टेक दिस, याद है काफी बच्चे नहीं थे उस लेक्चर में, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टेक द न्यूमेरिकल पार्ट, है ना, याद होगा शायद जो बच्चे प्रेजेंट थे। आई सेड दैट द नेक्स्ट पोर्शन दैट आई एम गोइंग टू टेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू बी देयर इन द एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज आई विल टेक इट व्हेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आज वो दिन है, बट यू गाइस हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी अब, होपफुली आप लोगों को समझ में आए, धीरे धीरे ट्राई कीजिएगा समझने की, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A reaction is in first order in A and second order in B. So as soon as we have, this question has been repeated multiple times in the board examination. So this is
very important for board exam. As it is, ये काफी बार boards में repeat हुआ है, as it is. ठीक है? So a reaction is first order in A and second order in B. That means first of all, from the first line, I can see that R, it is equal to rate constant multiplied by the concentration of A. First order to A की power 1, second order मतलब B की power 2. Order of reaction यहाँ पे कितना हो गया? Order it is equal to 2 plus 1, that is equal to 3. ठीक है ना? That's another thing. जैसे जैसे हमको like what we do ना, what I think the best way of doing numericals initially is whatever information is given, you try to extract all the data from that information. So if they have given the first order in A and second order in B, then I can write the rate equation, and from here I can also write the order of the reaction. Whether it is used, not used, I don't know. First of all, what we need to understand is that extract all the information, all the data from whatever is given. Write the differential rate equation. यहाँ पे generally बच्चों को ना दिक्कत हो जाती है. Differential rate equation क्या होता है? It's very easy also, that R it is equal to minus dA upon dt. That's it. Rate will be equal to the change in concentration of A divided by change in time. Or you can also write it like this. This rate of acid is minus dA upon dt. It is equal to, this is rate, or rate is equal to A into the concentration of A to the power 1, B to the power 2. Both of these are fine. To see there's no difference in any of them. So this also, that's fine. इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, differential rate equation पढ़ेंगे. The next question is very important. How is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times? ठीक है. Initially जो हमारे पास रेट है, दोस्तों हम R1 से डिनोट करेंगे, which will be equal to A into the concentration of A, whatever it is, to the power 1, multiplied by concentration of B, whatever, to the power 2, whatever the concentration of B is there. That, okay? Now rate will change when we change the concentration of B. So second rate will be equal to A into the concentration of A to the power 1, because we have not changed A. The concentration of B is 5. So अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 15 होगा, तो anything multiplied by 3, so it will be 3B. Initially जो भी था B था, अब 3 times to the power 2. Right? Now, how is the rate affected? So we need to find the relationship between R1 and R2. तो ऐसे करेंगे आप हमेशा R2 divided by R1. K A की power 1, 3B का square divided by K A की power 1 into B का square. So R2 will be equal to, K will get cancelled in both the cases. A to the power 1, A to the power 1 will get cancelled. R2 will be equal to R1 into P का square will be 9, B का square upon B का square. Both of these will get cancelled, and you will get R2 will be equal to 9 times of R1. Something like this. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. देखिए जरा. Yahya, Harsha, Soha, Khadija, you guys tell me, those who were present in the last lecture. Yeah, for the आप लोगों को समझ में आया? we don't Yes, have to sir. write. Yeah, Harsha. So for the first question, we don't have to write it in terms of B. No, that's it. Okay, sir. ठीक है. ट्राई कीजिएगा जिसकी पावर 1 है ना, उसी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं. ठीक है. द ऑर्डर जिसका 1 है ना, उसी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, बिकॉज आई होप थोड़ा अगर याद हो आपको, माइनस डी अपॉन डी टी, इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. बट क्योंकि उसका कोएफिशिएंट मोस्ट प्रोबेबली 1 होगा, तो फिर इस वजह से वी डोंट हैव टू ऐड एनी फैक्टर फॉर द रेट इक्वेशन. अगर वहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 अगर होता तो 1/2 वगैरह कुछ लेना पड़ जाता, राइट? सो बट even if you write it in terms of b minus dv by dt, it's fine, not a problem. But we don't know right now, क्योंकि हम लोग को दिया नहीं है. That particular equation is not given to us, है ना? What, Harsha? Yes, sir. ठीक है. बाकी समझ में आया? R2 is equal to 9 times R1. ठीक. Please copy this down and try this third one.
बाकी लोग बताएं फिर अन्ना, नोहा एंड सिद्दीका। डिड यू अंडरस्टैंड द सेकंड वन? समझ में आया आप लोगों को? अन्ना, अन्ना टेल मी। अन्ना, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? R2 is equal to 9 times R1? सच सच I बताइएगा। I think so. You think so? Okay, fine. What about Khadija? तो बात नहीं कर रही है। Noha, what about you? Did you understand, Noha? Noha, you're not audible again. Please use the chat, Noha. Quickly, Siddiqa, what about you? Bit of it, sir, yes. ठीक है, try the third one, है ना? How the rate is affected when concentration of both A and B are double. Hard नहीं है बहुत ज़्यादा, but the thing is that ना, you have not practiced enough to write this part. कि A की power 1, B की power 2, आपको practice नहीं है बस. The people who have attended the last lecture, उनको बस practice है इस चीज़ में. ठीक है, so they are more comfortable with it. Otherwise, conceptually कुछ hard नहीं. There are just new terms उसकी वजह से दिक्कत है. Once you're done with the third one, I'll send the answers on my WhatsApp. And the answer for the third one, guys. कितना टाइम लगा बताइए? Harsha, looking at your answer. जी, सही, correct, very good.
चलिए, take one more minute. Send me whatever you have done. Start sending me whatever you have done. Leave your pen, take up your phone and send it to me, whatever you have done. Yes, very good, correct. Yeah, here looking at your answer, it is correct, very good. Guys, send me whatever you have done. कुछ नहीं किया इन लोगों ने. Anna, turn your mic on, Anna. Anna, turn your mic on. कुछ नहीं हुआ आपसे. Quickly. जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी बताएं. हुआ नहीं हुआ, थर्ड वाला हुआ कुछ भी. I'm halfway done. Send me whatever you have done. Please, yeah. Send me whatever you have done. Okay, Anna? Khadija? Khadija? Khadija तो second. Noha, what about you? Noha? कुछ भी हुआ आपसे नोहा? सिद्दीका? सिद्दीका कुछ भी हुआ आपसे? No, sir. सॉरी, No, sir. कुछ नहीं हुआ, ठीक. सोहा, व्हाट अबाउट यू सोहा? जल्दी माइक पे बताइए ना, कुछ भी हुआ आपसे सोहा? अरे यार नहीं, ये तो करती है ना, ठीक है, बच्चे समझते ही नहीं है. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप लोगों को डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा है. ये दिक्कत है भाई, एब्सेंट कीजिएगा ऐसे ही होगा. यहाँ पे आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिखा है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आर सिमिलर. सोहा ने कुछ नहीं बोला, सर आई एम इन वेकेशन फॉर माय रीजन. अरे आप ये बताइए, आपसे हुआ? आर यू एबल टू डू दिस थर्ड क्वेश्चन? सोहा, were you able to do this third question? Yes or no में बता दीजिए थोड़ा जल्दी. नोट अ प्रॉब्लम, ठीक है. बुनियाद की तरह से क्या पढ़ रहे हैं भाई? अन्नापूर्णा, सिद्दीका एंड जिनको समझना है कैसे करना, माइक ऑन करें. हम नहीं बोलेंगे भाई किसको क्या करना है. जिनको समझना है कैसे करना, माइक ऑन करें. नहीं माइक ऑन करना, किसी को नहीं समझना, ठीक है. सो द थर्ड क्वेश्चन, आपने ये क्या, आपने 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 आपका तो सही आंसर आप, बाकी किसी को नहीं समझना है. अन्ना, नोहा, सिद्दीका किसी को नहीं समझना है. सरिया तो आंसर नहीं कर रही, ठीक है, कोई बात. ठीक. हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड? सो इनिशियली जो रेट हमारे पास उसको हम R1 लिखेंगे, विच विल बी इक्वल टू K इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए. और उन्होंने पहले बोला था ऑर्डर है 1 इसका, बी ऑर्डर है 2 इसका. सो द इनिशियल, उसके बाद रेट विल चेंज, R2 लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू K इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए. बट ए की कंसंट्रेशन इनिशियल से डबल. सो फर्स्ट केस में इफ इट वाज A, इन द सेकंड केस इट विल बी 2A to the power 1 multiplied by 2B, because we have doubled the concentration of B also to the power 2. Now we will do R2 upon R1, which will be equal to K. R2, first of all, we are going to write R2 K 2A multiplied by 2 ka square 4, B ka square B square, divided by R1 will be K as it is, A to the power 1 will be A, B square will be B square. So A will get cancelled, B square will get cancelled, K and K will get cancelled, we will get
R2 is equal to 4 times R1. No, 8 times R1. 4 to the 8, my bad. 8 times of R1. Now, there is a short trick. Short trick क्या है तो generalization है. As you can see that A and B are not going to matter. What's going to matter is the order and the change. What change we are. ठीक है, तो we will say always R2 will be equal to R1 into change in the concentration of the first reactant to its order. ठीक है, to its order. Order के लिए P की हम यूज कर रहे हैं P. तो if the concentration of A is changing, तो जो भी A में change हो रहा है उसका order कर देंगे. Multiplied by change in the concentration of the second item, if the second reactant to the power Q, and so on. This thing will be going. For example, if I look at the second question right now and third question right now, these will be very easily doable. For example, if I look at the second question right now, so they are saying how is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times. So what I need to write is R2 is equal to R1 multiplied by what is the change in the concentration of B? We have twice it. So I will just write 3. I'll just write 3 because हमने triple कर दिया 3 to the power of the order. Order किसका? B का. So whatever, what is then 3 times? 3 times किसको किया गया है? B को. तो B का ही order लिखिए. हर्षा यही बात समझ में आ रही है? सोनो पीसल नहीं? Yes, sir. नो सर, ठीक है, तो नो या यस क्या बोला आपने? क्लियर? मैंने बोला सर नो. नो बोला. ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हैं ना R1 इंटू क्या करना है आपको? इंटू चेंज. चेंज किसको किया आपने? सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए. सेकंड में क्या चेंज किया आपने? सेकंड में बी सर ए चेंज चेंज, किया. बी चेंज किया. कितना चेंज किया? 3 टाइम्स. 5. 3. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? बी का ऑर्डर क्या है? B2. और हाँ, तो उसके पास ऊपर पावर में ये चला जाएगा. सो यू कैन सी दैट R2 इज इक्वल टू R1 into 9. सेम आंसर. उसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो R2 is equal to R1. Did we change A in the third case? यस सर. कितना किया हमने? A को 2 क्या सर? डबल किया. 2. A की पावर क्या है? What is the power for A? What is the One. order for A? 1. तो One, 2 की sir. पावर into. What is the change for B? 2 सर. 2. And what is the order for B? 2 सर. 2. So this will be equal to R2 is equal to R1 into 2 square 4, 4 to the 8. R1 into. So even if you write only this much and you don't show this whole calculation in the board examination, it will be still correct. I don't know about your half yearly, I don't know about your periodic or unit test. मतलब बोर्ड्स में तो जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें क्या लिखा रहता है पता है आपको? हाउ इज द रेट अफेक्टेड? दे जस्ट राइट लाइक दिस. R2 will be equal to 9R. बस मार्किंग स्कीम बस इतना रहता है. ठीक है, दिस क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का आएगा बस. फाइन. दिस क्वेश्चन विल बी फॉर 1 मार्क्स. ये सेकंड थर्ड ये 3 मार्क्स का एक सवाल आ जाएगा. तो बोलने का तो ये 3 मार्क्स का है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस 1 मार्क क्वेश्चन. यस और नो? यू नो, इफ यू सी दैट दिस इज ओनली 1 मार्क क्वेश्चन. क्या ख्याल है? यस सर. है ना? ठीक. चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन. ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम दे रहे हैं आप लोगों को, है ना? यू गाइस ट्राई टू डू दिस. आई डोंट नो, आप देखिए अन्नपूर्णा, नोहा, सिद्दीका, कितना आप लोगों को समझ में आया ये वाला शॉर्ट ट्रिक हमने बताया. ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझना ही नहीं था. हमने पूछा किसको समझना, माइक ऑन करे, किसी ने माइक ऑन नहीं किया. Copy this down, raise your hand once you're done, then we'll do some more. By the way, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेल क्या है.
This del it is actually change in concentration. No, P and Q, these are order. Recipient also done. Waiting for Khadija, Noha, Siddiqa, and Sofa. Just waiting for Noha. नोहा आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे क्या हो रहा है भाई नोहा let me know if you are not done try this question guys a reaction is second order with respect to a reactant तो reactant को आप लोग a लिख लीजिएगा r is equal to k to the power 2 हो जाएगा और is the rate affected where if the concentration of एक ही reactant है ना there is not two react एक ही reactant ठीक है try this first of all write the rate law equation order आपको दिया हुआ है सवाल में what will happen if you double it what will happen if you half it तो सर हम फॉर्मूला ऐसा लिखना Yes. है R इज इक्वल्स टू के ए बस बी a to the power b नहीं आएगा लेकिन a का ऑर्डर कितना है व्हाट इज द ऑर्डर फॉर a पढ़िए सवाल को सेकंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑर्डर तो है दो ना टू जी जी ठीक है उसके बाद सेम चीज है ट्राई टू डू दिस मतलब वो शॉर्ट वे में कीजिए डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश कीजिए ठीक है ना डू द होल थिंग you don't even write need to write the del 1 del 2 है ना del 1 del 2 मत लिख दीजिएगा ना in the examination especially right now तो you can write it for the sake of understanding and memorizing the concept लेकिन एग्जाम में डिफिकल्ट टू अवॉइड करिएगा try to write 2 का power 2 r2 is equal to r1 self waiting for Farida Noha did you just send the answers once you're done and those who were absent this is the last chance to understand chemical kinetics and get comfortable with it क्योंकि आगे जितनी classes whatever classes you are going to have so all going to be dependent on the last class जो हमने फोन किया है so those who were absent in the last class stop writing send a message to Learnivio team to send you the lecture
लास्ट वेडनेसडे क्लास हुई है, वॉट एवर जो भी लेक्चर आपने मिस किया केमिकल काइनेटिक्स साइड, तेरा लेक्चर सिर्फ एक ही लेक्चर किया, हमने 2 लेक्चर किया शायद। हाँ, सो आस्क देम द रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट 2 लेक्चर्स, पूरा उसको कंप्लीटली देखिए एंड मेक योर नोट्स। उसके बाद ही मंडे को आइएगा तो समझ में आएंगी चीजें। अगर इसी तरह से आप नेग्लिजेंट रहे तो केमिकल काइनेटिक्स भूल जाइए, 6 मार्क्स एटलीस्ट आएगा केमिकल काइनेटिक्स से, वो भूल जाइए फिर आप। इफ यू आर हैविंग, इफ यू आर नॉट, बिकॉज इट इज वन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह नहीं है 3 पार्ट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 3 पार्ट्स ना, यू हैव द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी आपके पास यू हैव डिफरेंट डिविजन, फैराडेज लॉ, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर उसके बाद कंडक्टेंस। तो दीज 3 पोर्शंस दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर डायरेक्टली, है ना, बहुत ही कम रिलेशन है इनका। अगर आपको कंडक्टेंस आता है तो दैट्स नॉट नेसेसरली मीन कि आपको बाकी चीजें भी आती होंगी, या फिर बाकी चीजें अगर आपको नहीं आती है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट ऑन द कंडक्टेंस पार्ट, कॉलरॉस्टॉफ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इस सब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बट केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट लाइक दैट, इट इज वन चैप्टर, एक टॉपिक, मतलब सिंगल, एक ही ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। So maybe you may memorize 1 or 2 questions and be able to do those things, but पूरा चैप्टर आपको समझ में आना मुश्किल है if you don't go back to the last 2 classes। इतने समझाने के बाद भी अगर आप लोग मंडे को नहीं आए तो फिर देखिए बहुत ज्यादा तो एफर्ट नहीं करेंगे, आई कैन जस्ट स्लो थिंग्स डाउन कि हम आज भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ना कराएं, ठीक है। वी विल डू दोज क्वेश्चंस, दोज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मंडे, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन। बाकी तो फिर आपको क्लास आना चाहिए, रिकॉर्डिंग देखना चाहिए, तो जानकारी कम से कम लीजिए। वेट अ सेकेंड, अच्छा 2 और 1, अरे यार, अच्छा आप तो घबरा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। यही है मतलब आंसर। पहला तो ए स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना, ए स्क्वायर, ए क्यों लिखा, R1 इंटू चेंज लिखना, जस्ट नीड टू राइट द चेंज, राइट। यही Yes, sir. R2 is equal to R1 into the change, what is the change, 2, what's the power, 2 equal to 4, ए स्क्वायर नहीं है ना, ए स्क्वायर को हटा दीजिए, एवरीथिंग इज फाइन। Okay, sir. अन्ना ने तो ठीक से किया, आई थिंक R2 is equal to, हाँ हाँ ठीक है, R2 is equal to change 2 1, ठीक है, reduce to half, ठीक है। तो hopefully Anna is doing good in स्कूल में ठीक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। Anna, try to minimize the steps, है ना, you don't need to write the लास्ट के 2 स्टेप्स, लास्ट के 3 स्टेप्स, ठीक है, ओके इट्स फाइन। इफ यू लुक अन्ना, लास्ट 2 स्टेप्स आर सेम होंगे ना, लास्ट की तो 2 लाइन है, R2 is equal to R1 into 4 या R2 is equal to 4R1, they are same होंगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Try to understand है ना, it is 1 mark question, so you have to give time and space according to that only, सही है, Yes, sir. ओके ठीक है। See you guys, very simple, a reaction is second order with respect to a reaction, that means R, it is equal to A into the concentration of, let us suppose A, you can take any other number, sorry, any other letter here to the power 2, because it is saying that it is second order, see 2. Now in the first question they are saying that the rate is the concentration is double, so we'll write R2 is equal to R1 into change, what is the change, we have doubled it, what is the power, what is the order, 2, so this will be equal to R2 is equal to 4R1, 2 to the 4 into R. Second, just give me a second. Okay, so in the second case, it is reduced to half. So you have R2 is equal to R1. What is the change? You have halved it, half. So what is the order? Order is 2. So we'll get R2. It is equal to 1 by 4 R1. Copy this down, raise your hand once you're done. अच्छा, ये चैप्टर हो रहा है आपके स्कूल में या फिर खत्म हो गया, क्या है 3 अभी? No, sir. Electrochemistry is going on. बैटरी वाला भी बस यही ने मांगा, हर्षा आपने मांगा था बैटरी वाला, देखा आपने लेक्चर, नहीं देखा आपने भी ना? No, sir. I forgot to ask. वो जब जो बच्चे मांगेंगे हम उन्हीं को भेजेंगे सर।
तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Raise your hand once you're done, guys. Waiting for Khadija and Noha. I'm looking for some other questions similar type. मतलब दिक्कत ये है ना कि that एकदम सेम ही क्वेश्चंस है। फिर जैसे आपके पास एक सवाल है क्या? This is from sample paper by the way. ठीक है, तो ये डेल वन डेल टू वाले फंडा इस्तेमाल करके यू कैन कैलकुलेट। तुक्का मत मारिएगा बस। Send your answer in the Zoom chat itself. Zoom chat में भी भेज दीजिए आंसर। Oh my God, I have not got answer till now. And देखिए ये लास्ट टाइम है ना, देखिए केमिकल काइनेटिक्स में इतनी क्लास नहीं लगती है, ठीक है। तो ये सी 3 क्लासेस आर डन। लास्ट बैच का लास्ट ईयर का हम आपको बता देते हैं। C1 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 8 आपका थीसिस एक्स्ट्रा है इसमें पीवाईक्यूज। तो 7 लेक्चर्स आप केमिकल काइनेटिक्स में देखिए, C1 का, C2 में, C3 में और कम लेक्चर्स लगे होंगे होपफुली। C3 C2 का है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 अब यहीं पे आपके पास इन योर क्लास 3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। अब बस और 4 लेक्चर आप समझिए, 4 से 5 लेक्चर मैक्सिमम जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का, उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते, फाइन, बिकॉज टाइम। ओके हर्षा, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। ऑप्शंस में जो लोग गड़बड़ा जा रहे हैं तो प्लीज ऑप्शंस ना देखें। ओके यही आप, बाकी लोग बताएं। यस सर ना करें, ठीक है, बाकी लोगों को होगा। सी इज वेरी इजी। So we have for a reaction A plus 2B with the order with respect to A is 2, with respect to B is this 0. B के लिए 0। अच्छा by the way I don't know what the right answer is, है ना, बाकी लोग का आंसर आ गया, बस उनकी वजह से बता रहे हैं। ठीक है, R is equal to A into A की पावर 2 और B की पावर 0। B की पावर अगर 0 है तो we need to ignore it because anything to the power 0 is equal to 1।
एंड 1 में मल्टीप्लाई करें तो कुछ नहीं होने वाला, तो R is equal to what? A into concentration of A का square into like this. A का square, right? What will be the rate of change if the concentration of A is doubled and B is half? तो B के half करने से तो कुछ होगा नहीं. R2 it is equal to R1 multiplied by change. What is the change? We have doubled. है ना? A is doubled. Double क्या उसका पावर कितना है? 2. So this will be equal to R2. It is equal to 4 times of 1. Okay, that's it. Yeah, that is the correct answer. Increases by 4 times. Now there are other questions. हम आपको बस सवाल दिखा देते हैं. बोलिएगा कि सर इतने ही सवाल थे क्या? सवाल तो हैं, बट जैसे Sir, we have will this the question. order always be mentioned for such questions? What will be mentioned? Order, sir. हाँ हाँ, ऑर्डर दिया गया है. इस तरह के सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह के, तो इस ऑर्डर दिया रहेगा. जैसे ये सवाल है, ये तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखी, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, है, सेम बिल्कुल सवाल है. सिमिलरली वी हैव दिस क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है. हाँ, तीनों ही सेम सवाल है, बिल्कुल एज इट इज, है ना. एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम सेम लोगों ने अभी जस्ट किया है. एंड इसके वेरी सिमिलर क्वेश्चन वी हैव, व्हिच इज समथिंग लाइक दिस.